How many of you are hearing GitHub name for the first time? And how many of you know like what is GitHub and they have used it beforehand? How many of you know what is GitHub? Okay, people are raising hands, I guess. Okay, only Gautam knows what is GitHub. Okay, Guru Prasad knows, Komal knows. Today we will be learning like really very basics how like you can get started with how you can get started with GitHub, how you can build your profiles and why is GitHub used and what all features does GitHub offer you. Okay, I will be sharing my screen in a while. Just tell me if it is visible. Okay, is my screen visible now? I'm not exactly able to read your chats. I will just join with my uh, mobile phone. So, as the tagline says, GitHub is a place for anyone from anywhere to build anything. And how exactly this chronology works, we will be looking into that really very soon. Just give me a minute. And for everyone who don't know me, so my name is Jasmine Chourasiya, and I am the MLSA Microsoft Student Learn Ambassador Alpha, and I am also the GDSC lead of JSCOE. This session is basically based on introduction to GitHub, where I will be like guiding you throughout your journey of GitHub. Uh, what is the schedule for today? What are we going to see? I will just request a few of my team members who are available in the meeting. If there are any comments or questions in the chat box, just pin me with that. I'm not able to see the chat box right now. Okay. And you can ask your questions right away. Don't wait for the last Q&A session. We will be having it, but it's better to solve your doubts with like session going on. Okay, cool. So what are the contents of the table? We will be seeing what is Git and GitHub, what are the benefits of using GitHub, how you can get started, how you can build your profiles on GitHub. We will be having some hands-on practice while making repositories and everything. We will be seeing what are open source events, what is open source, how does open source exactly work. And the sixth part is the like kind of a surprise for you. Maybe it may not be like a surprise for everyone, but yeah, for the freshers or the beginners who are like attending this session or getting to know GitHub for the first time, it is going to be a big kind of a boon to you. Okay, let's start. What is Git? We will start by what is Git. So Git is a version control system. Okay, Git was developed in 2005 by a company. What does a Git do? It is a version control system. It controls the versions of your application. Okay, if you have gone through the caption of the event, it was said like if you are a software developer, why does a software developer exactly need GitHub? While जब अपन अपना project बनाते हैं, okay, so what we do is हम उसके different versions ना launch करते हैं, okay, so डिफॉल्ट या फिर जो ओरिजिनल मेथड है सो व्हाट इज द लाइक प्रॉब्लम इन इट कि जब हम न्यू वर्जन को लॉन्च करते हैं व्हाट इफ इट क्रैशेस ओके व्हाट इफ इट डजंट होल्ड द कैपेसिटी ऑफ द लाइक ना अगर उसने ना कैपेसिटी नहीं होल्ड किया या फिर अगर वो उतना क्राउड नहीं होल्ड कर पाया और देयर इज समथिंग व्हिच इज क्रैक या फिर कोड में कुछ एरर्स रह गए बग्स रह गए
So is there a way जहाँ पे हम reverse back जा सकते हैं? It is not in traditional style of coding. Okay. So Git is something which provides you the tradition, which gives you an edge over the traditional coding. So GitHub क्या करता है? GitHub is platform and Git is version control system. ठीक है? It tracks your history. It is free and open source. Anybody can use Git. Okay, you can install your Git software in your PCs and laptops. I will be showing you how you can install the Git, and then you can create backups. Like अगर version control कर रहे हैं, so of course you need backup. Okay, जो बड़ी बड़ी companies रहती है, वो backups के भी backups अपने साथ रखती है. What if like someday someone like किसी ने hack किया and some of the data तुमने एक दिन WhatsApp खोला and WhatsApp is completely crashed. Okay, so उन्हें वापस से revert back जाने के लिए what is useful is Git. Okay, it supports collaborations. जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है. ओके, सो व्हाट इज लाइक बहुत सारे डेवलपर्स एक सिंगल सोलो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं. Are making a website. So like I will be working on homepage, Komal might be working on the payment integrations, and like Akash will be working on API integrations and everything. So this is how developers build collaboratively. So collaboratively काम करने के लिए what is needed is कि सारा कोड जो है एक डेवलपर ने कुछ फीचर ऐड किया है, so वो दूसरे डेवलपर के पास रहना चाहिए, so that accordingly he can decide कि उसको और दूसरा क्या additions provide करने के हैं. Okay, so this is where GitHub platforms and Git the version control systems help you in doing this. Okay, and it also helps you in distributed development. So we will see कि I'll just show you how to download Git. Okay. I will share this link in chat box. You can open this link. ये Git की link जो official links provided है, and here like मेरा PC, the one which I'm using is MacBook, so it will automatically detect your device and you can download this. So using this, what will be happening is you can use Git through your terminals. Okay. So GitHub use करने के बहुत सारे तरीके. GitHub is a platform. Git version control system तुम बिना platform के भी use कर सकते हो, which is through terminals. Okay. Is my voice still breaking or is it fine? Like I can see a comment that my voice is breaking. Can someone just confirm, is my voice breaking or is it good? Breaking a little bit. Okay, I will check my internet connection. Just give me a minute. Is it clear now? Is it better? Yes. Yes. Okay. Cool. I will just keep my camera off so that you can hear me better. Okay. So did you guys check out the link which I gave you for Git? Yeah. You can download Git from this link for your device, whichever package is suitable for you. And then for like after downloading, if you want to check if the Git is successfully downloaded or not, what you can do is for Windows, you can search for command line, which is CMD. And like I am on MacBook, so we have terminal over here. And in terminal, when you type Git, okay, Git, and press enter, you can see the commands from Git, which the version control system provides us. Okay, you see this? So here are some commands like clone, init, add, reset. We will be seeing what are all these commands, what are all these functions GitHub is providing us. We will be seeing this in a bit. Okay, so this is all about Git. Now let's see what is GitHub. Okay. GitHub, it's a cloud-based service to host your repositories.
ओके, रिपोजिटरीज क्या है? रिपोजिटरी, थिंक अबाउट इट एज अ सोर्स कोड। ठीक है, सो एक छोटा सा जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसकी जितनी भी फाइल्स होती है, जितनी भी फाइल्स लाइक उसके अंदर इमेजेस हो गई या फिर लिंक्स एंड एवरीथिंग विच योर प्रोजेक्ट इंक्लूड्स। लाइक आई एम एन ऐप डेवलपर, मैं आपको ऐप का एक एग्जांपल दूंगी। सो इफ यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट एन एप्लीकेशन, सपोज वेदर एप्लीकेशन, तो उसके अंदर जितने भी GIFs हो जाएंगे या फिर उसकी जितनी भी फाइल्स है, XML फाइल्स हो गई, एंड देन उसकी जो लॉजिकल कोड्स, जावा फाइल्स, डॉट डार्ट फाइल्स एंड एवरीथिंग, जितनी भी ये फाइल्स रहेगी, ओके, सो इनका जो एक सेट ऑफ फाइल्स रहता है वो हम एक जगह पे फोल्डर में स्टोर करते हैं, विच इज नोन एज रिपोजिटरीज। ओके, सो गिटहब क्या करता है? वर्जन कंट्रोल प्लेटफॉर्म। गिट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड गिटहब इज वर्जन कंट्रोल प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म पे हम क्या क्या विजिबल रहता है? वी कैन ट्रैक ऑल योर चेंजेस टू द कोड्स, यू कैन सी हु मेड द चेंजेस एंड व्हेन आर द चेंजेस मेड, किसने चेंजेस किए, कब चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए। यू कैन डिसाइड कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में कौन चेंजेस करेगा। Okay, so everything related to like changes is like tracked by the GitHub platform. Okay, so what are the benefits of using GitHub? ठीक है, the first benefit is productivity, of course। जब बहुत सारे developers, if you're like posting your project on GitHub, so it's an open source। open source क्या रहता है? Which is open to everyone, anyone can contribute in it। ठीक है, he or she cannot do direct changes। जो भी changes रहेंगे वो आपको as if you are the owner, मेरे project में किसी को changes करने हैं, ओके, सो सामने वाला मुझे पुल रिक्वेस्ट भेजेगा, या फिर जस्ट थिंक अबाउट इट एज कि वो मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा दैट लाइक मेरे पास ये आइडिया है आपके प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करने के लिए, कैन आई डू दिस? ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई? यू कैन बिल्ड मोर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। जब दो ब्रेन्स काम कर रहे उससे अच्छा, लाइक अगर उसके ऊपर 10 ब्रेन्स एक साथ काम करेंगे, सो द प्रोडक्टिविटी लेवल भी ऑफ कोर्स भी इंक्रीज्ड। ओके, सेकेंड इज कोलैबोरेशंस। बहुत सारे लोगों को एक साथ एट अ टाइम सिमिलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर अलग अलग फाइल्स में या फिर सेम फाइल्स में काम करते आएगा। यस, सिक्योरिटी। when you like post your project on GitHub, there are options like to keep your projects public or private, and you can add licenses to your projects। सारी चीजें क्या होती है हम hands on practice में देखेंगे। just memorize the like जो भी है ना wordings में बोल रही हूँ, बस उतना याद रखने की आप try करो। okay, so productivity, collaborations and security, it's fine। किसी को अभी तक कुछ डाउट है? I will just see chat box once। किसी को कुछ डाउट है अभी तक? गिटहब क्या होता है, गिट एंड गिटहब का डिफरेंस समझ गया? Come on guys, keep the session interactive। Okay, cool। We will be moving further, which is getting started with GitHub। Okay, सबसे पहले हम GitHub का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। We will be setting up your profiles, जिनकी profiles अभी तक नहीं है। Can you raise your hands जिनकी profiles अभी तक नहीं है, so that I can get account accordingly। फिर हम उतना वेट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। Okay, there are 3 people, 4। Okay, there are 5। Cool, there are a good number of people जिन्होंने profiles नहीं बनाई है, so we will be waiting for them। तुम मेरे साथ जितनी भी प्रोसेस में बता रही हो, you can follow it। I will be sharing the links over here। This is the official website of GitHub, you know। अगर यहाँ पे जितने भी वेब डेवलपर्स है, I will suggest just look at the website। This is pretty cool, like it's so amazing। It's one of my favorite websites, by the way। Okay, this is the official site of GitHub, where like you can see कि है ना all the like information of GitHub, कि what does GitHub provide you। Okay, so simply what you have to do is sign in if you already have an account, sign up if you don't have an account। Okay,
After clicking on sign up, it will show you something this cool kind of an interface. Welcome to GitHub, and let's begin your adventure. I already have an account, so there are not much details GitHub will be asking you. You can just provide with whatever you have. Okay. Uh, जिनकी profiles नहीं है can follow the links with me. Okay, email ID is already taken. I have to use a different mail ID. Okay. You just have to enter your mail IDs and your passwords. Okay. जिसकी में बनाने की बाकी थी GitHub profiles. Are you doing with me? If you're stuck anywhere, like कुछ doubts आते हैं तो बताओ फिर. Ganesh Mohammed, are you able to sign in? After like setting up your password, it will ask you for an username. This is all. After like solving a puzzle, you will be able to sign in your account. हो गया सबका? किस किस की profiles बाकी थी? Did you create it? Can I get some answers in chat box? Yes, मोहम्मद की हो गई है. Cool. After like creating your profile, this is kind of an interface you will be seeing. This is my GitHub profile. Just a second, I will be logging into it. Okay, so this is the home page of GitHub. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल रहता है? Here's your profile. You can write your bios. You can write your achievements. There are a few highlights if you are a pro user or not. And अभी हम इसके बारे में बात करेंगे that how can you become a pro user. And at the end of this session, I told you that there's a surprise. Okay, so you can get the access to the pro version of GitHub. ठीक है, I will be sharing that tip with you soon. यहाँ पे सारे organizations available रहते हैं, whichever organizations you are part of. ठीक है, this is something you can look at it as a tracker. ठीक है, तुमने किस डेट को कितने और कौन से repositories में या फिर fields में contribution किया है, you can see it over here. Okay, the main patch, I'm not that active on GitHub, but this main patch you can see here is from Hacktoberfest. Okay, Hacktoberfest is an open source event. ठीक है, मैं details बताती हूँ उसके बारे में when we will discussing more about open source. Okay, here are the repositories. ठीक है, repositories जैसे मैंने बोला, repository is a set of your code. Okay, you can understand it as like सारी जितनी भी files रहेगी तुम्हारे project की are available here. The example which I gave you, the weather application, हम चेकआउट करते हैं कि repositories में available क्या क्या रहता है. Okay, so everything you can add a readme file over here. Readme file is something remember जब अपन छोटे थे, so books के ऊपर labels लगाते थे, Barbie dolls and superheroes cars के. तो readme file is exactly a label to your repository. repository तुम्हारी book है जिसके अंदर सारा content है, and readme file is labeled to that book कि book के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है is every जो भी रहेगा, how to use that book, how to read that book, how to like extract the
complete potential of the book. Everything, all the data is written in this readme files. Okay. And folders क्या क्या available रहते हैं? Images, fonts, Android, the iOS folder जहाँ पे iOS का code रहेगा. There's a readme file over here. Uh, like this is the application in Flutter. So जितने भी code वगैरह available रहते हैं. Okay, you can see it over here. Cool? सबको समझ गया कि repository क्या रहती है? Now we will see how we can create a repository. Okay, कुछ doubts रहेंगे तो pin करो. ठीक है? Can you see this new button over एक्सक्यूज here? मी, Yeah. एक्चुअली मेरा साइन इन अभी हुआ, तो उसके बाद आपने क्या बोला वो एक बार रिपीट करेंगे क्या? Okay. After signing in, you can create. तुम्हारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई. You can see like ऐसा डैशबोर्ड जैसा दिख रहा है. हेलो, किसका डाउट था? Yeah. आई कैन सी दोज like create your first project Yeah. repositories. हाँ. Exactly. Now you will be like asked to create your repositories. वहाँ पे आपके projects add करने के लिए. ठीक है. So Yes, I'm yes, just discussing about the repositories. Have a okay. look. ठीक है. यहाँ पे new पे create किया हमने. Click किया. Okay. So this is the interface to create your new repositories. New repository is just a project. ठीक है. उसको short form में developers के language में repo बोलते हैं. ठीक है. So there are few templates जो तुम choose कर सकते हो to create your repos. Okay. Here is the owner. Who will be the owner of your repository? Like अगर तुम बहुत सारे जैसे ये दो मेरे GDSC के organizations है. I have like मेरे internship का एक organization है. So these are the various organizations which I can select कि repository का owner कौन रहेगा. ठीक है. So from here you can select who will be the owner of the repository. Next thing which you have to do is you have to give a unique name to your repository. Okay. We will be giving it as a demo, which is already existing. So we will be giving it as GD. Okay. I'm taking session for MLSA. MLSA demo repo. Cool. So I will name my project as MLSA demo repo. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जस्ट लाइक कि रीडमी फाइल्स रहती है वैसे यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज यू कैन सिलेक्ट पब्लिक और प्राइवेट प्रोफाइल्स जहाँ पे हमने सिक्योरिटी का पॉइंट डिस्कस किया था. सो दिस इज समथिंग जहाँ पे सिक्योरिटी कम्स इन द पिक्चर. ठीक है. प्राइवेट तुम्हें तभी एक्सेसिबल रहेगा इफ यू हैव प्रो अकाउंट या फिर प्रो एक्सेस ऑफ गिटहब. So फिलहाल के लिए हम पब्लिक रखते हैं. I will add a readme file. Here are the licenses kind of a thing. जहाँ पे like licenses tell others why they can or cannot do what they can or cannot do with your code. Okay. You should always follow the code of conduct of GitHub and humanity. Okay. किसी के भी repos में जाके फालतू PR नहीं भेजने होते हैं. Which is like code of conduct. You have to always follow that. I will be adding a readme file and I will click on create repository. And here मेरी repository create हो जाएगी. Okay. और repository create करना समझ गया? How you can create your repositories. Ganesh, are you able to like create your own repository? Yes, ma'am. Okay. We will see. So, this is afterwards, I guess. Okay. How GitHub works. हमने repository create कर लिया. अब हम थोड़ा सा technical deep dive लेंगे. ठीक है. So there are I won't be presenting screen क्योंकि हमें जल्दी से hands on के ऊपर switch करने का है. There are 3 words you should know: fork, commit and pull request. ठीक है. इसको इसी sequence में याद करो. Fork, commit and pull request. Fork is something. Fork क्या होता है ना, किसी और की कॉपी को मतलब किसी और की रिपोजिटरी की कॉपी हमारे फाइल में क्रिएट करना. ठीक है. व्हाई वी हैव टू डू दिस? जैसे अगर मेरा प्रोजेक्ट है
सो आई डोंट वांट कि तुम डायरेक्टली आओ एंड देन मेरे प्रोजेक्ट में चेंजेस करो. व्हाट इफ लाइक अगर उसकी वजह से एरर्स आ गए या फिर बग्स आ गए मेरे प्रोजेक्ट में, या सो आई डोंट वांट कि लाइक कोई भी मेरे प्रोजेक्ट में चेंजेस करे. सो इवन दो लाइक अगर तुम्हें चेंजेस करने के, सो व्हाट विल यू बी डूइंग कि तुम मेरे एग्जैक्टली सेम प्रोजेक्ट की एक कॉपी तुम्हारे है ना प्रोफाइल पे क्रिएट करोगे. ठीक है, दिस इज समथिंग फोर्क. ओके, दिस इज फोर्क के डेफिनेशन. कमिट, कमिट इज कमिटिंग द चेंजेस. जितने भी चेंजेस तुमने किए हैं उनको सेव करने की जो प्रोसेस रहती है, इट इज नोन एज कमिट. ओके, फोर्क एंड कमिट. थर्ड थिंग इज पुल रिक्वेस्ट. पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? पुल रिक्वेस्ट टेल यू अबाउट द चेंजेस यू हैव पुश टू अ ब्रांच इन अ रिपोजिटरी. जैसे तुमने कुछ चेंजेस किए, इफ यू हैव एडेड फीचर इन माय प्रोजेक्ट. ठीक है, मेरा वेदर एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट था, तुमने एक फीचर ऐड किया दैट नाउ इट कैन टेल यू द टेम्परेचर ऑफ फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो. ओके, मैंने सिर्फ इंडिया के लिए बनाया था. यू एडेड द फीचर दैट नाउ इट कैन सजेस्ट मी द टाइम जोन्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम अदर फॉरेन रीजन्स. ओके, you have added this as a new feature. मुझे पता कैसे चलेगा? क्योंकि तुमने फोर्क किया था एंड तुमने तुम्हारे सिस्टम के अंदर वो चेंजेस प्रोवाइड किए. ठीक है, सो अब वो चेंजेस मेरे प्रोफाइल में तो शोकेस नहीं होने वाले. हाउ विल आई गेट टू नो? यू विल सेंड मी अ पुल रिक्वेस्ट. पुल रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट होती है जहाँ पे यू विल स्पेसिफाई कि हे देयर, मैंने ये चेंजेस तुम्हारे यहाँ पे किए हैं. ओके, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये एडवांसमेंट्स या फिर ये फीचर्स मैंने ऐड ऑन किए हैं. इफ यू वुड लाइक टू सी देम, प्लीज वेरीफाई देम एंड यू कैन ऐड इफ यू वांट. ठीक है, जब मुझे वो पुल रिक्वेस्ट मिलेगा, आई विल सी इफ दैट पुल रिक्वेस्ट इज वर्थ इट. क्या उसमें बग्स तो नहीं है या फिर मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट तो नहीं चेंज हो गया. वॉट एवर मेरी रिक्वायरमेंट्स जैसी है, आई विल बी लुकिंग इन टू दैट एंड अकॉर्डिंगली मैं उस पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करूंगी. इवन आई कैन कमेंट ऑन दैट पुल रिक्वेस्ट. ठीक है, सो वापस से अपन गिटहब पे आ जाते हैं. ठीक है, द फर्स्ट थिंग विच वी विल बी डूइंग इज वी विल बी एडिंग अ फाइल. ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में, डेमो प्रोजेक्ट में, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल. आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. आई विल नेम इज at index.json. ओके, मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल इंक्लूड करी एंड I will write, hey, I am Jasmine. Hey, okay. Uh, this is my demo file. Okay. तो मैंने चेंजेस किए, देन आई विल गो डाउन. यहाँ पे कमिट न्यू मैसेज. ठीक है, कमिट न्यू फाइल, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, सो मुझे उसको सेव करना पड़ेगा. ठीक है, सो आई विल टाइप हियर कि added new file. Okay, I will commit this changes to the main branch. ठीक है, ब्रांचेस क्या होती है? देर आर लाइक, जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो है ना, उसको दूसरे दूसरे ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है सो दैट सारे चेंजेस एक ही ब्रांच में नहीं होंगे. इफ यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट लेट्स से फीचर्स. ओके, कोई बैक एंड पे काम कर रहा है, कोई फ्रंट एंड की डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स पे काम कर रहा है. सो पूरे प्रोजेक्ट को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है. सो इवन इफ अ ब्रांच है ना क्रैशेस, सो बाकी ब्रांचेस में उसका फर्क नहीं पड़ता है एंड वी कैन रिवर्ट बैक द चेंजेस विच वी हैव डन. ओके, सो दिस इज index.json फाइल. ठीक है, इतना समझा, रेपो क्रिएट करना, उसके अंदर फाइल्स क्रिएट करना. नाउ वी विल बी सीइंग कि एग्जैक्टली ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे करते हैं. I will require an volunteer over here. So, कौन स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? So that we can see how we can send the pull request, कैसे fork करते हैं, या फिर if you want to contribute in my file, तो तुम्हें कैसे करते आएगा? Who would like to like share their screen? Anyone who wants to volunteer? Akanksha, Azim, Divya.
गौतम, यश, वैष्णवी, साक्षी। Okay. Utkal wants to volunteer. Okay. Am I pronouncing your name correct? Is it Yes, Utkal? you are. Yes. Okay. You can start sharing your screen. Okay. I will stop mine. Am I sharing my screen? Yes, it is visible. So now everyone will observe कि उत्कल के साइड पे क्या हो रहा है, ठीक है? So Utkal, can you please? This is your first repository, I guess. Okay. Please Yes, it is. open the repository which I have provided the link in chat box. Yeah, I have opened it. Okay. So हमने process क्या देखी थी? The first thing is to fork, then commit, Commit. then pull request. ठीक है? So Yeah. Utkal, click on fork. ऊपर Okay. top right corner पे you can see the fork. Yeah, I Okay. click on it. अब yes, you can see owner के यहाँ पे उत्कल का नेम आ रहा है and then repository name is same as जो मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है? So what now उत्कल is doing, वो मेरे प्रोजेक्ट का एक कंप्लीट कॉपी उसके सिस्टम में डेवलप कर रहा है, ठीक है? उत्कल क्लिक ऑन क्रिएट फॉर. Okay, Yeah, I have done as you it. can see, yeah, perfect. As you can see, if you see on like top left side corner, वहां लिखा है उत्कल का नाम, यूजर नेम है, and after that you can see मेरे प्रोजेक्ट का नेम, and below that it is written from, it is forked from my GitHub profile and the project name. ठीक है? Okay, let's do some changes in my files. ठीक है? Utkal, let's go to like you can make changes in index.json or readme files. Any of the file you can select. Okay. Click on the pencil button. Yeah. You can write your name. You can write anything else you want. This is I've done it. exactly the way. Yeah. This is exactly the way जैसा actual projects में features add करने के लिए होता है. Right now we are just like हम थोड़ा सा basic level पे changes कर रहे हैं. ठीक है? Added a few lines. Cool. Scroll down. अभी हमें commit करने के changes. Commit messages क्यों लिखने होते हैं? So that जब भी हम changes को track कर रहे हैं या फिर anything else we are doing, so हमें clearly visible रहे कि हमने change क्या किया था. ठीक है? सो उत्कल ने सक्सेसफुली चेंज कर दिया है. लाइक मेरी प्रोफाइल में इफ यू लाइक बाकी सब मेरे प्रोजेक्ट में जाके देखोगे, यू कैन नॉट सी द सेकंड लाइन व्हिच उत्कल हैज एडेड राइट नाउ. कोई बताएगा कि ऐसा क्यों है? Because it is my copy. मेरा personal. या करेक्ट, ये अभी चेंजेस उत्कल की पर्सनल कॉपी में किए हैं. अभी हमने ये चेंजेस मेरे रिपोजिटरी में पुश नहीं किए हैं हमने. ओके, नाउ थर्ड स्टेप क्या है? Pull request. Pull request, correct. Click on pull request. Yeah. Okay. Now we will be creating a new pull request. Okay. Should I create? Okay. If you will scroll down, yeah, you can see जितने भी changes किए हैं ना, यहाँ पे GitHub तुम्हें सारे display करेगा. Okay. The line in green, अभी वो red lines को ignore करो. It is just showing an error to us कि वो like formatted way में नहीं है. So just ignore that. The green highlight is displaying कि यहाँ पे कुछ new add किया है. Okay. And ऐसा ही एक red ना highlight होता है which is to display कि वहां से अगर कुछ delete किया रहेगा तो. Cool. So we will be seeing कि ऊपर comparing changes, कौन सी दो फाइल्स में changes compare हो रहे हैं?
your main file and mine file changes I have made in mine. या द बेस फाइल जो कि मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट था एंड द हेड रिपोजिटरी जो कि उत्कल की है, उसने न्यू जो मेरे यहाँ से फोक करके जितने भी चेंजेस उसके है ना वर्जन में किए हैं. ओके, क्लिक ऑन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट. Okay. Okay, here you can write the message जो कि मुझे डिस्प्ले होगा, the message through which I will be able to see कि उत्कल ने क्या चेंजेस किए हैं. Cool. उत्कल ने सक्सेसफुली मेरे पास पुल रिक्वेस्ट सेंड कर दिए. थैंक यू सो मच उत्कल. Like I will be sharing my screen again and I will show Yes. you कि मेरे पास पुल रिक्वेस्ट आई है या नहीं. Okay, is my screen visible? Yes, it is. Okay, I just need to refresh this. How can I get rid of this thing? Just give me a minute. Okay, now you can see यहाँ पे एक pull request दिख रही है मुझे. उस pull request accept करने के पहले we will see index.json में are there any changes? नहीं, यहाँ पे कोई भी changes available नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक pull request merge नहीं करी है. So I will be going on this pull request. I will click on, यहाँ पे मुझे pull request दिख रही है. It is 1 minute ago by उत्कल. Okay, I will be clicking on this. Added a new file. यहाँ से I will be able to see कि files changed. Okay, उत्कल ने क्या changes किए हैं. I can see it over here. ठीक है, I can review them. ठीक है, after reviewing, like if I want कि थोड़ा और better feature उत्कल add कर सकता था या फिर कुछ changes हो सकते, कोड थोड़ा और short हो सकता था. ठीक है, तो मैं यहाँ पे there's a option here where I can review his file. ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट्स लिख के उत्कल को सेंड कर सकती हूँ that you this is how you can improve your pull request and then you can send me again. ठीक है, फिलहाल हमें उत्कल की पुल रिक्वेस्ट सही लग रही है. So what we will be doing is कि merge pull request. Before that, this is something that this branch has no conflicts with the base branch. Conflict क्या होता है जब लाइक इफ अगर सेकेंड लाइन पे किसी और ने भी पुल रिक्वेस्ट भेजी एंड उनके कोड कोलाइड्स हो गए. ठीक है, एक लाइन पे या फिर सेम फीचर के लिए मैंने जब है ना एप्लीकेशन क्रिएट किया या मैंने वेबसाइट क्रिएट करी, तो मैंने उसकी जो प्राइमरी कलर था मैंने रेड सेट किया और फिर बाद में उत्कल ने हम दो लोग है ना पीआर भेज रहे थे, किसी ने रेड कलर का भेजा एंड देन सेकंड ने उसको सेट कर दिया ब्लू पे. ओके, सो इट विल क्रिएट एन कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, कि अभी गिटहब को कौन सा पता है कि कौन सा लेने का है या फिर विच वन इज परफेक्ट. ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट करता है. राइट नाउ देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स, सो आई विल मर्ज दिस पुल रिक्वेस्ट. ठीक है, सो दिस ग्रीन वन विच वाज ओपन, यहाँ पे पहले ओपन लिखा था, इट विल चेंज इनटू मर्ज्ड. ओके, एंड इफ अगर मैं कोड वापस से रिव्यू करूं index.json, I can see उत्कल का कोड यहाँ पे आ गया है. ओके, तो सिंपल प्रोसेस क्या थी, देयर आर जस्ट 3 स्टेप्स इन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. ये 3 स्टेप्स फॉलो करके ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते आता है, विच इज फोर्क. ओके, उसके बाद come on guys, fork. Second step is commit, third step pull request. ठीक है, अभी इनको यूज कहाँ करने का है, दिस इज ऑल अबाउट गिटहब. ओके, बेसिकली तुम्हें सिर्फ गिटहब यूज करने के लिए जितनी चीजें लगती है, ये गिटहब का बहुत छोटा पार्ट है
बट एटलीस्ट गिटहब के लिए स्टार्ट करने के लिए जितनी भी चीजें लगती है, दिस 3 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अदर देन दिस जितनी भी आईडीज होती है, ओके, जस्ट लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो, VS कोड हो गया, सो ये सब गिटहब का अलग अलग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. वेयर जस्ट यू हैव टू डू इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स में तुम्हें गिटहब को इंक्लूड करना है एंड डायरेक्टली तुम वहां से तुम्हारी जितनी भी फाइल्स है वहां पे अपलोड कर सकते हो. ठीक है. राइट नाउ हमने क्या किया था, वी जस्ट एडेड न्यू फाइल फ्रॉम दिस ओवर हियर. लाइक हम प्लेटफॉर्म को ही यूज करके फाइल्स क्रिएट या फिर अपलोड कर रहे थे. ओके. अदर देन दिस व्हाट यू कैन डू इज कि तुम डायरेक्टली है ना, तुम्हारी जो भी आईडीई यूज कर रहे हो या फिर तुम सिस्टम्स यूज कर रहे हो, जैसे इंटेलिजे आइडिया हो गया और वॉट एवर यू आर यूजिंग, डायरेक्टली तुम वहां से पुश या पुल कर सकते हो कोड. व्हाट डज पुश मीन्स? ठीक है. पुश मतलब कोड को आगे भेजना, एंड व्हाट इज पुल, वहां से कोड रिट्राइव करना. दिस आर द टर्मिनोलॉजीज जो आईडीईज यूज करती है. ओके. Other than this, you can also use, there's a cool application which you can be using, which is GitHub Desktop. ठीक है. GitHub Desktop helps you जब तुम्हें सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना रहता है. So like it's easier to use GitHub Desktop. वहां से पुल एंड पुश की जितने भी है ना सारी है ना टास्क रहते हैं वो काफी इजीली परफॉर्म करते आते हैं. ठीक है. नाउ वी विल बी टेकिंग सम टाइम. तुम्हें क्या करना है, जो मैंने रिपोजिटरी भेजी थी, ठीक है, वहां पे सब लोग मुझे पीआर सेंड करेंगे. ओके. मैं पीआरस तुम्हें मर्ज करके दिखाऊंगी कैसे पीआरस मर्ज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एंड दिस इज योर टास्क अकॉर्डिंग टू विच मैं तुम्हारे सर्टिफिकेशंस एंड जितने भी आगे के एक्साइटिंग गिव अवेज हमने डिसाइड किए थे या फिर डिक्लेयर किए थे वो अलॉट होंगे. Okay, so come on, start sending me some PRs. Like किसी को अगर प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं करते आ रहा है, यू कैन शेयर योर स्क्रीन. ओके. हैंड्स ऑन सेशन मतलब सिर्फ मैं करूंगी ऐसा नहीं होता है, इवन यू विल बी वर्किंग ऑन इट. Okay, how many of you are doing? How many of you are sending me PRs? You can add any changes. Okay, कुछ भी change करो फाइल में. It's just a demo file. You can add your own files in it. You can update readme file or you can update the index.json files. Repository access की सबने. ठीक है. बाय द टाइम हमें कुछ स्टूडेंट्स के पीआरस रिसीव होते हैं, बाय द टाइम आई विल टेल यू कि ओपन सोर्स क्या होता है. ठीक है. ओपन सोर्स पीपीटी. ठीक है. हियर आर ओपन सोर्स इवेंट्स. ओपन सोर्स क्या बताया मैंने? ओपन सोर्स क्या होता है? सुनते रहो एंड इन द बैक एंड ट्राई टू कंप्लीट द टास्क. ठीक है. पीआरस आने चाहिए. जब तक मैं पीआरस तुम्हारे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, टीम वोंट बी गिविंग यू योर सर्टिफिकेशंस फॉर द इवेंट. ओके. सो ओपन सोर्सेस किसी प्रोजेक्ट को सबके लिए अवेलेबल करना, उसका कोड पब्लिकली शेयर करना इज नोन एज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. एंड ओपन सोर्स इवेंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे ऐसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को एंड ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस को है ना थोड़ा सा प्रोत्साहन या फिर व्हाट वी कैन से मोटिवेट किया जाता है, इज एन ओपन सोर्स इवेंट. सो दो मेजरली जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. फर्स्ट वन इज हैकटोबरफेस्ट एंड सेकंड वन इज जीसॉक. ठीक है. हैकटोबरफेस्ट इज जो कि अक्टूबर के मंथ में होती है. सो लाइक यू हैव एम्पल टाइम, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट जीडीएससी या फिर नेक्स्ट एमएलए से वी विल बी होस्टिंग द हैकटोबरफेस्ट सेशंस. तुमने अगर लाइक इफ यू फॉलो
लाइक हमारे लीडर्स को तुम फॉलो करते हो ऑन रेगुलर बेसिस, यू माइट हैव सीन कि हमें रिसेंटली हैक्टोबर फेस्ट की गुडीज अलॉट हुई है, जहाँ पे टी शर्ट्स, यू कैन इवन प्लांट योर ट्रीज इफ यू डोंट वांट योर टी शर्ट्स, यू कैन प्लांट ट्रीज, टी शर्ट्स रिसीव हुए, स्टिकर्स वगैरह रिसीव हुए। ओके, सो हैक्टोबर फेस्ट इज एन इवेंट जहां पे तुम्हें किसी भी प्रोजेक्ट्स पे या फिर जो भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं इंटरनेट पे, यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू मेक 4 वैलिड PRs। ठीक है, 4 वैलिड PRs का मतलब 4 वैलिड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तुम्हें किसी भी प्रोजेक्ट्स पे 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे करने चाहिए मोस्ट रिकमेंडेडली। ठीक है, तुम्हें 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करने रहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज GSOC। GSOC अभी स्टार्ट होने वाला है, तो लेट मी शो यू, which is Google Summer of Code। ठीक है, this is an open source like biggest global open source event which will be starting soon I guess। हो गया है शुरू। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारी कंपनीज या फिर दिस इज काइंड ऑफ एन समर इंटर्नशिप बाय गूगल। ठीक है, सो व्हाट इज डन हियर इज डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स डिफरेंट कंट्रीज के ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनका कोड या फिर उनका जो ना कोड बेस है, उनके प्रोजेक्ट्स है, वो सबके लिए ओपन सोर्स करते हैं। एंड यू हैव अ चांस कि तुम इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के है ना कोड बेस में तुम्हारा कोड इन कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो जब तुम द प्रोसेस इज, इसके लिए ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका है फॉर विच लाइक मैं तुम्हें लिंक शेयर करती हूँ उस इवेंट की, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। ठीक है, दिस इज द लिंक फॉर द गूगल समर ऑफ कोड। इसके लिए तुम्हें स्टाइपेंड अलॉट होता है, देयर आर मेंटर्स विच आर गूगल वर्किंग मेंटर्स या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स तुम्हें अलॉट होते हैं हु विल हेल्प यू in your journey of contributing in their projects। ठीक है, so this is one of the greatest opportunity which is coming along your way I guess। so this is something you won't miss out। and करना क्या है, the same exact process जो अभी अपन ने करी, 4 commit and PR। ठीक है, we'll be searching for G yeah, and this is the link for the event। I will copy the URL। Okay, this is the recording URL, recorded video, where you can like get everything. You can get to know everything all about what is GSOC, कब start हो रहा है, mentors कैसे allot होते हैं, exactly क्या process रहती है। Even if you are a first year student, तुम इसमें ना इसके लिए apply कर सकते हो, approach कर सकते हो different organizations को mentorships के लिए with your ideas, कि तुम्हारे ideas उनके projects को कैसे better बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ओपन सोर्स इवेंट्स। अब देखते हैं कितने PRs हमें रिसीव हुए हैं, हुए भी हैं या नहीं। आई कैन नॉट सी एनी PRs, लाइक तुम लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करनी है, लाइक इफ यू आर गेटिंग एनी डिफिकल्टीज तो सॉल्व हो जाएगी अभी यहाँ पे। डोंट यू वांट टू डू दैट? एनी प्रॉब्लम किसी को हाईलाइट करना है, व्हाई आई एम नॉट रिसीविंग एनी PRs? मोहम्मद, अंशुमन, गुरु प्रसाद, प्रथमेश, साक्षी, एनी रीजन? अभी लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ रीजन? ओके, एटलीस्ट कुछ तो बोलो। हाँ, नहीं नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, एनीथिंग? अजीम कोई मीटिंग में है या मैं अकेली बड़बड़ कर रही हूँ? दिव्या? ओके, लैपटॉप नॉट अवेलेबल। मोहम्मद कुछ समझा नहीं कैसे करना है, एक बार रेपो लिंक भेजो। ठीक है, मोहम्मद एक और बार आपको दिखाते हैं।
Azim, can you like share your screen, like if you're doing it right now? May I rejoin with laptop? या कोई भी जो भी लैपटॉप से अवेलेबल है, लाइक अगर हम एक और बार पुल रिक्वेस्ट सेंड करने की मेथड एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है, कैन शेयर योर स्क्रीन. Just a second. Can I have shared the repository link again? जिनके पास एक इवन लाइक तुम मोबाइल से भी कर सकते हो. इट्स नॉट कि लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, शुड नॉट बी द रीजन. गिटहब प्लेटफॉर्म मोबाइल फोन्स पे भी अवेलेबल है. May I share it? या श्योर. Is my screen visible? Yes, your screen is visible. या अब क्या करूँ इसके आगे? ओके, सो यहाँ पे दिस इज माय रेपोजिटरी. ठीक है, आपको नेम के Yes. नीचे फोर्क का मैसेज दिख रहा है. Yes, ma'am. या वहां पे फोर्क पे क्लिक करिए. Yes, ma'am. स्क्रॉल डाउन. लाइक वो थ्री डॉट्स पे क्लिक करके कैन यू लाइक प्रेजेंट दिस इन डेस्कटॉप मोड. आई गेस काफी सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल ही नहीं है. 1 second, ma'am. या Is it fine, ma'am? या इट इज विजिबल. फोक्स, जस्ट गो बैक. हमने शायद फोक्स की डिटेल्स पे क्लिक कर लिया है. ओके कूल. अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है, वहां पे फोक पे क्लिक करिए. देयर आर 5 फोक्स. Yes, ma'am. क्रिएट न्यू फोर्क. यस, नो फोक्स. द फोक हैज ओके, आपने ऑलरेडी फोक करके रखी है. या ऑलरेडी एग्जिस्ट. सो आप उसके ऊपर ही क्लिक करिए. आपकी एग्जिस्टिंग जो रेपो आपने फोक की है उसके ऊपर, ऊपर ऊपर उसके ऊपर. बैक कीजिए. या उसके ऊपर हाँ. क्लिक करिए आपके नेम पे. यस. ओके, सो आपने फोक कर ली रेपोजिटरी ऑलरेडी. नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग इज मेकिंग चेंजेस इन इट. ठीक है, index.json फाइल पे जाइए. Okay, there you can see a pencil over there, right Yes. side पे. Yes. Yeah, click on that. Okay. Okay, now you can add anything. Write your name, which college you are from, or which year you study in. Okay, now. Okay, cool. Scroll down.
हाँ, यहाँ पे आप एक कमिट मैसेज लिखिए दैट यू हैव एडेड योर एंट्री, यू हैव एडेड योर नेम, राइट समथिंग, आपने क्या चेंजेस किए। ओके ओके, नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग इज, फर्स्ट अपन ने फोक करी थी, आपने चेंजेस करे एंड देन यू विल बी कमिटिंग द चेंजेस। क्लिक ऑन कमिट चेंजेस। फाइन। सो अभी जितने भी चेंजेस आपने किए वो आपके रेपोजिटरी में हो गए कमिट, ठीक है, आपके रेपोजिटरी में सेव हो गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको मुझे सेंड करना पड़ेगा। हाउ विल आई नो कि आपने कुछ चेंजेस किए या कुछ ऐड किया है, ठीक है। सो नाउ यू विल हैव टू सेंड मी दिस। ओके, कोड के बाजू में आपको पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है, यस मैम। या क्लिक ऑन इट। एक न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे हम। ओके क्लिक ऑन न्यू पुल रिक्वेस्ट। ओके, सो ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म ने है ना कंपेयर कर लिया है। ओके, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, write a message. You have already written it, still you can write it once again. Added a line. Cool. Okay, कमेंट करना click है on ना? create pull request. ओके या ऊपर वाला है ना कमेंट मैसेज जो रहता है वो कंपलसरी रहता है, नीचे इट्स जस्ट द मोर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट ऑफ सेइंग इट, ठीक है। ओके मैम। दिस इज हाउ गणेश ने अभी सक्सेसफुली कंट्रीब्यूट कर दिया है मेरे प्रोजेक्ट में। ओके, मोहम्मद, इज द प्रोसेस क्लियर नाउ? दिस इज हाउ हम किसी रिपोजिटरी पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उनके कोड्स में हम दिस इज द वे वी कंट्रीब्यूट इन अदर प्रोजेक्ट्स। अब मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके आई विल बी शोइंग यू कि मेरे पास कैसे आई। थैंक यू सो मच गणेश फॉर वॉलंटियरिंग, यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। यस मैम। सो दिस इज माय वो जो रेपोजिटरी है, मेरे पीसी की रेपोजिटरी है यहाँ पे। आई विल शो यू द कोड फर्स्ट। यहाँ पे कोड में अभी फिलहाल सिर्फ मेरा एंड उत्कल के चेंजेस है। ओके, एंड आई हैव 3 पीआरस ओवर हियर। ओके, हम लेंगे अभी जो गणेश ने पीआर किया है उसको चेकआउट करते हैं अपन। आई कैन सी विच एवर फाइल्स गणेश हैज चेंज्ड ओवर हियर, ठीक है। गणेश ने कौन कौन सी फाइल्स चेंज की एंड एवरीथिंग सीम्स परफेक्टली फाइन टू मी, सो मैं मर्ज कर दूंगी, ठीक है। Yes, and I will be merging the pull request. It has successfully been merged. अब जब मैं कोड वापस से रिव्यू करूंगी मेरा, सो आई कैन सी देयर कि मेरा उत्कल का एंड गणेश का कोड है वहां पे अवेलेबल। गणेश और उत्कल ने जितने भी फीचर्स ऐड किए थे या फिर जो भी कोड उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट के फॉर्म में भेजा था, सो आई हैव एक्सेप्टेड इट। ओके, अभी देखते हैं, अभी 3 लोगों के आए हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली देयर मस्ट बी अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो आई विल बी शोइंग यू कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस ब्रांच हैज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मस्ट बी रिजॉल्व। सो अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट पे बहुत सारे पुल रिक्वेस्ट आए हैं एंड इफ इट इज क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। आफ्टर दैट कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि सेम लाइन पे गणेश एंड यश ने दोनों ने नेम्स लिखे थे। सो मैं क्या करूंगी, गणेश के कोड को 4th लाइन पे शिफ्ट करूंगी एंड यश के कोड को 3rd लाइन पे शिफ्ट करूंगी एंड आई विल मार्क इट एज रिजॉल्व
over here, and then I will commit the merge. I understand. और अभी यहाँ पे इशू रिजॉल्व हो गया है, ठीक है. दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आई कैन सक्सेसफुली merge the pull request now. Okay, is it clear? Is everything clear up till now? मोहम्मद आर्या डाउट्स क्लियर, प्रोसेस समझा थोड़ा और? आप थोड़ी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे, सो इट्स नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट. Okay, it's yes, it is really very easy. There are just three things you have to fork, you have to commit. First, you have to do changes, and of course, then you will commit, and then you have to send the PR. 3 steps for open source contributions. Okay, everyone, is all the things here clear? Are all the things here clear? Yeah. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. So ये तो हो गया, काफी बिगनर फ्रेंडली सारी चीजें हो गई. Like due to time complexities, I won't be able to like show you more. I will be sharing something. मैं इसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी शेयर कर दूंगी बाद में. But for now, you can copy this from the chat box. This is cheat sheet. ठीक है. जैसे मैंने बताया कि there is something कि टर्मिनल को यूज करके हम है ना, जो भी विदाउट इवन यूजिंग द पोर्टल या फिर विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द आईडीज, हम टर्मिनल को यूज करके कैसे करेंगे. आई होप देयर माइट बी फ्यू पीपल जिनको पता रहेगा कि टर्मिनल से कैसे करते हैं. सो दिस चीट शीट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. यहाँ पे सारे जितने भी कमांड्स होते हैं गिट के, ओके, वो यहाँ पे सारे लिस्टेड आउट है. उनके सिंटैक्स क्या रहते हैं, एंड जब मैं सीख रही थी तब मैंने ये चीट शीट क्रिएट किया था. ठीक है. So this is something which will help you out a lot. ठीक है. So I guess थोड़ा सा एडवांस लोगों के लिए this cheat sheet is something which will be helping you. Beginner friendly लोगों के लिए cheat sheet पे अभी इतना ध्यान मत दो. Just focus on the prior steps जितने भी मैंने बताई है. And here we are to the end of this session, and I will be giving you something interesting. ठीक है. GitHub student developer pack. How many of you know about this GitHub student developer pack? किस किस को पता है कि developer pack क्या है? How many of you have it? How many of you own it exactly? किस किस के पास है available? प्रहलाद सिंह के पास है, गुरु प्रसाद owns it. Okay, Ganesh. Okay, so maximum of the participants you don't know, and I am here to tell you this is like a gift from my side to you, and also from the GitHub. Okay, GitHub developer pack is something जहाँ पे तुम्हें ऑफर करता है टू लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइक प्रो. तुम्हें जितनी भी चीजें तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी में लग सकती है. और डोमेन्स कितने हैं? क्लाउड, डिजाइनिंग, डेवलपर टूल्स, डोमेन नेम, गेम डेवलपमेंट, IoT, लर्निंग, मार्केटिंग, मोबाइल, प्रोडक्टिविटी. Ask what, like you just name it and GitHub provides it you to free. ठीक है. फ्रीली जस्ट गिटहब तुम्हें सारी चीजें प्रोवाइड करता है. व्हाट यू हैव टू डू इज, आई विल शेयर द लिंक टू यू. इस लिंक पे जाना है. यू हैव टू साइन अप फॉर गिटहब डेवलपर पैक, एंड सेम लिंक पे यू कैन सी कि क्या क्या अलग अलग चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल होती है. देयर आर नेम्स, अजूर के क्रेडिट्स अवेलेबल होते हैं, जेट ब्रेन्स, ओशन, लाइक इतनी चीजें, डॉट टेक, डोमेन नेम्स. And then of course the GitHub Pro version which I was talking about, जहाँ पे तुम private repositories वगैरह create कर सकते हो. Okay, and there are really many more benefits of GitHub Developer Pack. You have to just sign up for it. ठीक है. साइन अप की प्रोसेस ऐसी है, तुम्हें तुम्हारे GitHub अकाउंट से लॉग इन करना रहेगा. एंड नेक्स्ट थिंग विच यू विल हैव टू डू इज साइन अप में दे विल बी आस्किंग यू तुम्हारा प्रूफ दैट यू आर एन स्टूडेंट. ओके, स्टूडेंट आईडी या फिर वॉट एवर प्रूफ यू कैन अलॉट देम. व्हेन आई वाज अप्लाइंग मैंने फ्री रिसिप्ट ना अपलोड की थी बिकॉज आई डिडंट हैड माय आईडी कार्ड एट दैट मोमेंट. आईडी कार्ड जहाँ पे तुम्हारा नेम,
एंड तुम्हारा जो एकेडमिक ईयर है वो अच्छे से विजिबल हो, करंट एकेडमिक ईयर, ठीक है, ऐसा एक आईडी तुम्हें वहां पे अपलोड करना है। एंड सिर्फ इट विल टेक अप टू लाइक आई गेस 2 to 3 days। एंड तुम्हारा जैसे भी फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, यू विल गेट द मेल्स कि तुम्हारा फॉर्म अप्रूव, यू हैव लाइक योर फॉर्म इज बीन अप्रूव्ड एंड गिटहब डेवलपर पैक इज बीन अलॉटेड टू यू। ओके, एनी डाउट्स इन दिस? किसी को बाद में अगर कुछ है ना डिफिकल्टीज आती है लाइक अप्लाई करते वक्त या फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, डू नॉट वरी अबाउट इट। वापस से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देयर इज नो लाइक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू कैन फिल अप योर फॉर्म। फाहीम, डू यू हैव एनी डाउट? एक बार एक्सेस करने के बाद हम मतलब एक बार एक्सेस किया यूज कर दिया, बाद में लिमिट है क्या, मतलब टाइम पीरियड कुछ इतने दिनों तक यूज कर सकते हैं पैक? या देयर इज अ टाइम पीरियड, 1 year की वैलिडिटी रहती है गिटहब डेवलपर पैक। You can use it up till 1 year. ओके, थैंक यू। Yeah. Okay. This was all from my side. Yes, Prahlad, of course you can. Yeah, I'll just take 1 or 2 minutes of students because I think this is important uh, for people who are getting started with GitHub and creating their own account. So what I can do is, can you just allow me to share my screen so that I can just quickly share my screen and show them the thing which I want to share? Yeah, sure, you can Is share. Yeah, just a second. I hope it is visible. Is it so? Is my screen Yeah, it visible? is. Yeah, Yes, it is. so guys, this is important. Like when you are getting started with GitHub, no, you can actually create your profile. So here, you just need to create a repository named as the same user. The username has to be same, has to be same as the name of the repository, and that will be stored as readme.md, where what you actually can do is you can create your profile similar to LinkedIn, where a background image would be there, and you can actually write about what you are currently working on, what is your tech domain, and how would you like to people to connect with you. So this is an interesting thing, and this may be like, it's very easy. You can take this as a homework from today's session. So just like Jasmine taught you like how to create a repository, you can do the same, and you can just create the changes and commit it, and it will be displayed over here. So I hope this might be helpful, because when people try to see your GitHub repositories and GitHub profile, they'll firstly see your what exactly your profile looks like. So I hope this might be helpful to students. Thank you so much, Prahlad. Like what Prahlad basically means to say is, तुम्हारा एक पोर्टफोलियो काइंड ऑफ अ थिंग जनरेट कर सकते हो गिटहब पे। एंड यस, ऑफ कोर्स गिटहब इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाइल जब भी तुम इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करते हो, एंड फॉर एवरीवन जो कि फ्यूचर लीड्स बनने वाले हैं, ठीक है, तो गिटहब इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें जितने भी आज तक तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सो यू शुड अपलोड ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, एंड वो एक्सेसिबल रहना चाहिए। उसके अंदर कोड्स एंड फाइल्स जितनी भी सारी चीजें हैं वो वहां पे रहनी चाहिए। what other people can do is, like, if I share my GitHub profile link with you all, so what you can do is ना कि तुम मेरे projects check out कर सकते हो, code check out कर सकते हो, and there's an option to download the like source code at your system. So जैसे अगर कोई मुझे एप्लीकेशन चेकआउट करना है जो कि आई लेट्स से कि योगेश ने बनाया है, कोई एप्लीकेशन बनाया है योगेश ने, या फिर उसने कोई वेबसाइट क्रिएट करी है और मुझे वो चेकआउट करने की, व्हाट आई विल डू इज, मैं उससे गिटहब लिंक मांगूंगी। आई विल बी चेकिंग आउट इस प्रोजेक्ट, एंड वहां से मैं डाउनलोड इट इन जिप फाइल करूंगी, या फिर क्लोन द प्रोजेक्ट एट माई एंड। ओके, तो मैंने एक बार क्लोन कर लिया, सो आई विल बी एबल टू रन योगेश का जो प्रोजेक्ट है वो मैं मेरे एंड पे रन कर सकती हूँ।
the same thing you can do is तुम कोई सा भी प्रोजेक्ट जस्ट है ना पिक कर सकते हो कि उसके अंदर क्या है अवेलेबल. ठीक है. Let's go on my profile. Okay, and we will jump to like we will search for an application. Let's say Netflix clone. We will search for or GitHub. ओके मुझे नेटफ्लिक्स क्लोन का एक प्रोजेक्ट चाहिए था. वो मैंने गिटहब पे सर्च किया एंड यू कैन सी द नंबर. देयर आर 39K, लाइक देयर आर 39,000 रिजल्ट्स जो कि मुझे इसने लाके दिया है. एंड देयर इज समथिंग दिस नेटफ्लिक्स क्लोन व्हिच एग्जैक्टली मैचेस टू माय रिजल्ट. मैं यहाँ पे उसका पूरा कोड चेकआउट कर सकती हूँ. हियर इज अ रीडमी फाइल कि तुम्हें क्या क्या तुम्हें लाइक इसके साथ करना है. there's a demo file. जैसे मैंने बोला readme file is something which is label for your project. ठीक है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या है, यूजर इंटरफेस और फिर है ना टूल्स, कौन कौन से टूल्स या फिर लैंग्वेजेस यूज किए हैं. एंड इवन गिटहब डिटेक्ट करता है लैंग्वेजेस और वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है कि टाइप स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML कितने अमाउंट में क्या क्या यूज हुआ है. एंड हाउ कैन यू डाउनलोड दिस? हियर इज अ कोड. ठीक है. तुम एक तो इसको लाइक है ना यहाँ से कॉपी लिंक करके एग्जैक्टली पेस्ट कर सकते हो तुम्हारी किसी भी आईडी में. लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो सपोर्ट्स दिस थिंग कि तुम डायरेक्टली क्लोन कर सकते हो और यू कैन डाउनलोड इट इन अ जिप फाइल एंड देन तुम उसको इंपोर्ट कर सकते हो VS कोड में या फिर वेरेवर यू वांट. ओके दिस इज हाउ. अगर तुम्हें लाइक किसी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए या फिर तुम्हें किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड को चेकआउट करने का है, so this is how you will be doing it. Okay, so this is one of the extra tips. And yeah, successfully we are here at the end of this session and I am done from my side. किसी को कुछ doubts हो गए या फिर if you want to add anything else you can do that. Do you have any doubts? आज जितना सिखाया उतना क्लियर है. टर्मिनल बेस्ड गिटहब यूज करने के लिए जितना भी कमांड लाइन यूज करने के लिए है उसके लिए अपन एक डिफरेंट सेशन लेंगे वेयर वी विल बी जस्ट सेइंग कि कमांड लाइन यूज करके गिट एंड गिटहब कैसे यूज करते हैं. ओके एनी डाउट्स? There are 26 participants in the meet. Kunal, Gautam, Azim, Akanksha, any doubts? No? Okay, No, no. cool then.